Hello student, this question basically asked in GATE 2015 for 2 marks. This question from the diode chapter, okay. And the question is like this, okay. So for a silicon diode with a long P and N region, the acceptor and the donor impurity concentration are 10 to the power 17 per centimeter cube and 10 to the 15 per centimeter cube respectively. The lifetime of electron in P region and holes in N region are both 100 microsecond. The electron and the hole diffusion coefficients are 49 centimeter square per second and 36 centimeter square per second respectively. Assume Kt by Q is equal to 26 millivolt. The intrinsic carrier concentration is 10 to the power 10 per centimeter cube and Q is equal to 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. When a forward voltage of 208 millivolt is applied across the diode, the whole current density injected from P region to N region is. Now we see the solution of this question. So देखिए ध्यान से जो क्वेश्चन आपका है, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच लाइक formula oriented question, yes. And if I just apply this result and we get the answer, so here we get the Na, Nd, the p type, this doping concentration in inside doping concentration, tau and tau p, d and dp, and the forward voltage which I applied across the pn junction. So I think so that everything is given. If I just apply this formula, we get the result. But I just provide the little bit idea of this formula कि ये मेरे पास formula कहाँ से आया है. So just I provide the little bit idea. Okay. So say this. देखिए ध्यान से, वैसे तो क्या करना है, आप इन results को सीधे यहाँ पे implement करना है and we get the result directly. Okay. So if I just provide the little bit idea how we basically solve this question, okay. So I say कि कहीं ना कहीं मेरे पास क्या है, ये P region है, this is we have a N region, yes. So this is P side and this is N side here. ओके. सो ये कहीं ना कहीं मेरे पास P साइड है और ये मेरे पास क्या है, N साइड है. तो जैसा कि अगर मैं आपसे बोलूँ, इफ आई जस्ट टेक दिस इज पॉजिटिव x डायरेक्शन, यस. So whenever I just put the forward bias, so here I say this is plus and here we have a minus, yes. तो इस तरह से यहाँ से पुश होगा एंड इसके बाद क्या होगा, ये जंक्शन पे जाएगा, इसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ थर्मल इक्विलिब्रियम और ऐसे दिस मैग्नेटिक एरियर कॉन्सेंट्रेशन होगा जो कि एन साइड आपका पी एन नॉट होगा और जो पी साइड है उधर क्या होगा आपका, ये एन पी नॉट होगा. इज इट करेक्ट? सो लाइक दिस पी एन नॉट इज व्हाट, आई से दिस एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी, एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी. अब देखिए जैसे इसको फॉरवर्ड बायस करोगे तो डेफिनेटली आई से दिस यहाँ से इस तरह से डिफ्यूज करेगा. तो इस तरह से डिफ्यूज करेगा. ओके. तो डेफिनेटली एक इसमें जरूर दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है कि वेन एवर वी अप्लाई द फॉरवर्ड बायस ऑफ लाइक 208 मिली वोल्ट, हाउ मच बेसिकली द कैरियर इज बेसिकली यू नो प्रेजेंट एट द जंक्शन एट x इज इक्वल टू 0. if I say, तो यहाँ पे कितने कैरियर्स होंगे. सो आई से दिस इज वी हैव pn ऑफ 0 if I just assume like this. अब देखिए ध्यान से ये इस तरह से डिफ्यूज हो जाएगा भी और बहुत तेजी से कम भी होगा. कम क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से रिकॉम्बिनेशन होगा. तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ सर, लाइक टोटल कॉन्सेंट्रेशन जंक्शन पे कितना होगा, पी एन ऑफ 0 प्लस पी एन नॉट. सो अगर हम किसी डिस्टेंस x पे अगर पी एन ऑफ x लिखना चाहें, दिस इज कॉल्ड द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर होल इन n साइड एंड विच इज पी एन ऑफ. तो आई से दिस पी एन नॉट plus this is constant, and I say this is the temperature. If I say the temperature fixed, the magnetic error concentration which is already present in your n side, which is your pn naught ni square upon nd. And I say this what about this pn of 0, और ये आपको पता है कि कहीं ना कहीं क्या होगा, बहुत तेजी से कम हो रहा है, माइनस एक्स बाई एंड हियर आई से दिस एल पी. तो ये कहीं ना कहीं होल है तो माइनस एक्स बाई एल पी. तो ये पी एन ऑफ एक्स आ जाएगा. अब मेरे से पूछा गया है द करंट डेंसिटी फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन इज. सो पी रीजन टू एन रीजन इज गिवन बाई, तो यही करंट डेंसिटी मेरे से पूछी गई है. लेकिन ये कहा गया है जस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि द करंट डेंसिटी इंजेक्टेड फ्रॉम, इंजेक्टेड मीन्स कि यहाँ से उधर साइड जो इंजेक्ट हो रहे हैं उस करंट डेंसिटी को बताना है. मीन्स वी नीड टू फोकस एट एक्स इज इक्वल टू 0. बट आई से दिस, अगर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, करंट डेंसिटी निकालना है. सो हाउ वी गेट, आई से दिस jp x is equal to, I say this minus q dp, and I say this dp by dx. So here I say this dp by dx is just pn of x. So dpn of x, yes, jp of x is equal to minus q dp. jp of x is equal to minus q dp, dp by dpn by dx of x, yes. So this is we have. So jpn of x is equal to क्या हो जाएगा यहाँ से, minus q dp, dpn upon d q dp upon dx, yes. Now I just try to basically differentiate this number. तो ये मेरे पास constant number है, जैसा कि आपको दिया गया है, fixed है पूरी तरह से. this p n naught is fixed here. Okay, so जैसा कि अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि what about the pn of x, so it should be, I say this, तो pn naught की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी. So pn naught should be equal to 0.
और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यू डी पी एंड माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई एल पी हियर, and which should be Pn of 0 and exponential I say माइनस एक्स बाई एल पी, क्योंकि फिर से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन बाई एल पी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क आता है ये पी एन ऑफ जीरो क्या होगा। सो पी एन ऑफ जीरो इज जस्ट कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब फॉरवर्ड बायस लगा रहे हैं वी वोल्ट का, तो कितने कैरियर्स ये जंक्शन पे आ जा रहे हैं। सो इफ आई जस्ट write this result direct, okay, so pn of 0 is equal to, if I just go through the basic chapters, we get the pn of 0, which is not also big deal. So pn of 0 is equal to, I say this, pn naught, okay, exponential v by vt minus 1. So this is we have, so this is pn naught e to the power v by vt minus 1. If I just replace here, तो जैसे ही इस pn of 0 को यहाँ पे रखेंगे, so जैसे ही pn of 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, q dp lp, and here I say this pn of pn naught and v e to the power v by vt minus 1 exponential minus x by lp, और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, और इसमें जैसे ही पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे, सो एज आई पुट x इज इक्वल टू 0, सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट, सो जैसे ही यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो आई गेट you know jp of 0 is equal to q, if I just write for a moment, see, so here I say this is q dp, and I say this pn naught upon lp, and exponential I say this v by vt minus 1. So somehow I say this Pn naught is what, Ni square upon Nd. So I just replace Ni square upon Nd. So it should be, I say this Jp put x is equal to 0. So we write here Jp of 0 is equal to. तो इसको आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, the current which is just injected from P region to N region is what? I say this Jp of 0 is equal to Q dp, and Pn naught is just Ni square upon Nd. So Q dp Ni square upon Nd and Lp V by Vt minus 1. So ये कुछ इस तरह से मैथमेटिक्स है. If you don't know the formula, so we can just derive it, no problem, which is not a big deal, which is very easy to solve you, okay. See, if I just replace all the numbers, because here the q is given, even I say this ni is also given, yes, and nd is also given. If I just see the nd, where is nd? Okay, this is nd is also given, yes. So ni given, q given, nd given, okay. Now v is also given, so this is we have this is v is given, yes, and vt is also given, this is vt, this is 26 millivolt, so vt is also given, yes. So here we observe that the vt is also given. Now I say this dp is not given, yes, so dp is given, yes, but I say this lp is not given, so l is equal to, or lp is equal to root dp into tau p. So I say this dp given and when tau p given, so whenever we go through this results we get the lp also, so we get the q ni dp nd lp and e to the power v by vt minus 1, and whenever we just try to solve this number, so we get the jp diffusion, or I say this the current because of the hole which is injected from p region to n region, and we got the answer is 286 point 6 nano ampere per centimeter square. So this is the answer of this question, is 286 point something, I say this, which is 286 point, or I say this approximated to 286 286 nano ampere per centimeter square. So this is basically, I say this answer of this question is. So I just replace all the numbers, not a big deal, just try to solve it and we get this answer, okay. So this is we have a solution of this question, okay. Thank you.